Hi there. Welcome back to my another IELTS speaking video. My name is Arun. Once again, I'm back with another latest cue card which is being asked by IELTS examiners. If you're going to take exam in the month of April, May, June, July, and August, then you could see this cue card on your test day. And it's always a great idea to prepare some nice sample answers before your test day. And I'm also going to explain in the Hindi so that everybody understands each and every piece of language clearly. So let's begin the sample answer. Question is, describe a skill that you can teach other people. Questions are, what it is, how you learn it, how you can teach others this skill, and explain how you feel about this skill. It was quite tricky for me to decide what skill to talk about because I'm not someone who is gifted with lots of skills. So I was struggling to choose one particular skill. But then I suddenly remembered about culinary skills. And I hope it's okay to talk about it. As this cue card asks me, how did I learn it? Well, I'm fortunate enough to have a culinarian mother. Gifted, अगर आप किसी को डिस्क्राइब करते हैं गिफ्टेड, दिस मीन्स कि परमात्मा ने ऐसा स्किल, ऐसा गुण उसको दिया है जो कि हर एक व्यक्ति के पास नहीं है. कमेंट्स में जरूर बताएं. जैसे उदाहरण के तौर पर किसी एक सिंगर की अगर मैं बात करूं, अगर पंजाब के अंदर बात करूं तो सतिंदर सरताज हैं, और अगर मैं हिंदी बॉलीवुड में बात करूं तो सोनू निगम हैं, और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं. कमेंट्स में जरूर बताएं आप कौन से सिंगर को गिफ्टेड मानते हैं, जिनको परमात्मा ने ऐसी बख्शिश दी है कि जिनकी आवाज बहुत ही ज्यादा बुलंद है और सुंदर है. गिफ्टेड. लॉट्स ऑफ मीन्स सेवरल. लॉट्स ऑफ. सो culinary स्किल्स, कुकिंग से रिलेटेड जो स्किल्स होते हैं उनको बोलते हैं, जिनकी कुकिंग अच्छी होती है. culinary स्किल्स, ये बॉयज और गर्ल्स आप दोनों ही इस सैंपल आंसर को यूज कर सकते हैं. I'm fortunate enough. If you describe somebody, if you say that I'm fortunate enough, or if you are a fortunate enough, this means that you're quite lucky. बहुत किस्मत वाले हैं. उदाहरण के तौर पर I'm fortunate enough to watch your videos, sir. अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस, मेरे सैंपल आंसर्स आपके लिए अच्छे हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें I'm fortunate enough to see your YouTube channel or your videos. A culinarian mother. Culinarian mother उस मदर को बोलते हैं जिसके कुकिंग के स्किल्स लाजवाब हों. उदाहरण के तौर पर पंजाब के अंदर साग, जो culinarian mothers जो पंजाब के अंदर बनाती हैं, बहुत जबरदस्त बनाती हैं. कमेंट्स में अपनी मदर के लिए जरूर लिखें क्या आपकी मदर भी culinarian मदर है. दिस मीन्स उनके कुकिंग के स्किल्स जबरदस्त हैं. कमेंट्स में जरूर लिखें. Who taught me several dishes, namely pizza, chocolate, cake, and dosa. Don't get me wrong, I've had no formal training. Having said that though, I could teach someone pizza pretty well. I also taught how to cook the pizza to some of my mates when I was free a few months back. I vividly remember when one of my buddies was alone at home. He was quite starving, so he asked me to order some food. Don't get me wrong, if you use this phrase, this means आप एग्जामिनर को शो कर रहे हैं कि सर मुझे गलत मत समझना कि मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है. Having said that though, बट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आपको बोलना हो कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैंने 2 बार एग्जाम दिया. Having said that though, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी. I prepare well. या फिर मैंने ABC बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट से मैंने तैयारी किया, लेकिन फिर भी मेरा स्कोर नहीं आ रहा है. Having said that though, I'm not getting my desired band score. I've also taught present perfect. अगर आप 7+ band score करना चाहते हैं, खास तौर पर अगर आप GT के कैंडिडेट हैं, सो कोशिश करें, try to show wide range of grammatical structures to the examiner. For example, present perfect, past perfect, present progressive, past progressive, passive, conditionals. Mates आप friends की जगह पर यूज कर सकते हैं. Don't say again and again friends. You can say mates. Vividly remember. If you vividly remember something, this means that you clearly remember. Starving. When you say starving, this means that you're very hungry. Starving. Whenever like you get back from your IELTS classes and you get back and you say to your culinarian mother, Mom, I'm starving. कि मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है. Sadly, we didn't have bucks to place an order, and there was a time when I went through how to cook pizza. To my surprise, it was tremendously toothsome.
I fervently believe cooking is an essential skill because many students are into going abroad, so I would highly recommend learning this skill before going overseas. Sadly, जब आप किसी चीज से पहले sadly बोलते हैं, so this shows to the examiner कि आप अब कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसको आप शेयर करते ही आप सैड हो जाएंगे, आप उदास फील करते हैं. जैसे अगर आप कहें कि सर मैंने 2 बार एग्जाम दिया. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, खास तौर पर स्पीकिंग में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और कर सकते हैं, मंडी डबवाली या फिर बठिंडा में आप मेरी पर्सनल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं 1-on-1. डेफिनेटली आई कैन गारंटी कि आपका स्कोर 7+ जरूर आएगा. एक बार जरूर आप मुझसे मिलें. अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, खास तौर पर अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं. So sadly, when you say sadly, this means, let's say that you say that, sir, I took exam twice, but I got 6.5 in speaking or 5.5. Let's say that you are a student of academic, okay? और अगर आप कहें कि सर मैंने 2 बार एग्जाम दिया, sadly, I didn't get my desired band score. To my surprise, went through. So went through past के अंदर went through, present के अंदर go through. Go through का मतलब होता है प्रेजेंट के अंदर एक्सप्लेन करना. जैसे अभी मैं इस सैंपल आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो पास्ट में अगर मैं कहूं कि मैंने कल एक सैंपल आंसर आपको एक्सप्लेन किया था, सो उसके लिए मैं यूज करेंगे went through. तो उसके लिए यूज करेंगे went through. ओके, सो टू माई सरप्राइज वी यूज टू माई सरप्राइज जब भी कुछ सरप्राइजिंग होता है. जैसे अगर आप कहें कि सर मैंने पहले आइल्स की कोचिंग ली थी और मेरा एग्जाम ठीक नहीं हुआ था, लेकिन टू माई सरप्राइज आई गॉट ABC बैंड स्कोर. Tremendously toothsome, right? If you describe something tremendously, if you say something is tremendously toothsome, this means tremendously really, very. Toothsome means बहुत ज़्यादा tasty. Tremendously toothsome. I fervently believe, this means that I strongly believe. Essential means zaruri, overseas, abroad. I'm pretty sure that I'll be teaching a thing or two in the foreseeable future. I'm pretty sure this means कि मैं sure हूँ. A thing or two means कुछ ना कुछ मैं पक्का टीच करूंगा फ्यूचर में जाके, in the foreseeable future. When you do something, when you will do something in the foreseeable future, this means कि आपको दिख रहा है आने वाले 2 या 3 महीनों में ये मैं पक्का करूंगी या करूंगा. जैसे अगर आप कहें 2 या 3 महीनों में मैं पक्का, मुझे लगता है मेरा ये बैंड स्कोर आ जाएगा. I'll get ABC बैंड स्कोर in the foreseeable future. अगर आप IELTS क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बठिंडा में ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. डबवाली में भी आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में. माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन. वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड.